Hi everyone, welcome to Road to Cat 99, and in this video we are going to discuss how you can maximize your score in XAT 2026. The exam is just around the corner and believe me, this is one of the exams जहाँ पे आपको सब freedom है. You have 170 minutes, you have three sections and you can switch across section n number of times, right? So let's discuss how we can make best use of our time and what should be our right strategy to maximize our score in each section. I have appeared for 5 times in the ZAT and every time I scored around 99 plus or 99.9. I think 3 times I have scored 99.9. So let's see how do I do this and let's see how you can maximize your score through this video. So let's understand some basic pattern. VA में आपके 26 questions आते हैं. So now there is just VA not LR, right? DM में 21 questions are there and in QADI you will get 28 questions. So the main part will have 75 questions और main part जो है वो ही matter करता है और कुछ आपका matter नहीं करेगा. You will have roughly 170 minutes with complete freedom, right? So you can switch between any sections. You can start your exam with any of the three sections and उसके बीच में भी आप कितनी भी time पूरे एग्जाम में स्विच कर सकते हो, right? And sectional cutoffs are very important, right? When you are going for the ZAT 2026, right? Please keep this in mind that sectional cutoff बहुत important है. A lot of students every year miss on this part. कभी उनका DM का sectional cutoff clear नहीं हो रहा, कभी quants का नहीं हो रहा and या कभी VA का नहीं हो रहा. एंड एक्सेलराई इज इजी एंट्री फॉर ऑल. बिलीव मी, एक्सेलराई में मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत ही एवरेज होते हैं, राइट? या जिनका कैट उतना अच्छा नहीं गया होता, बट अब जब वो 3 आवर्स में अपनी परफॉर्मेंस देते हैं तब वो बहुत ही अच्छा स्कोर कर जाते हैं. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड इज कि यहाँ पे यू डोंट नीड टू स्कोर टू हाई, राइट? द मोमेंट यू गेट समवेयर अराउंड 95 परसेंटाइल, जहां पे कैट में आपको 95 में कुछ नहीं मिलेगा, बट इन एक्सेलराई you will get a call from Auxiliary Jamshedpur as well as Auxiliary Delhi. दोनों का एक ही इंटरव्यू होगा, right? And if you are non-engineer or if you are a female or if you are a category student as well, right? So there are different cutoffs for these people. तो अगर नॉन इंजीनियर फीमेल आप हो और आप 92 93 के अराउंड स्कोर कर रहे हो, हाई चांस दैट एक्सेलराई विल कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू. So if you score decently in this exam, high chance that you are going to clear the cutoffs and you will receive the call from the best college of India for the HR or for the BL. So all depends on how you utilize your time, right? So a lot of students are going for the ZAT exam as well. You all will have 170 minutes. Roughly your preparation will also revolve around what you prepared for CAT, right? तो अब यहाँ पे मैटर ये करेगा कि आप 170 minutes को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, right? And how you are performing in those 170 minutes. Believe me, there will be no nervousness, there will be no external pressure, there will be no chaos. Unlike CAT जहां पे कभी बहुत difficult section आ गया, exam centers में problem है, ऐसा ZAT में generally नहीं होता, right? So first thing I would suggest you all to pause this video and rank your sections, right? You can rank your sections based on the difficulty level, right? Or based on the score. For example, I feel that for me VA is more difficult than quants or then DM, right? So I will rank accordingly. And let's say if I believe that I can score more in the quants than in DM or than in verbal, right? Accordingly, I will give more priority to this section, right? So यहाँ पे हमें दो क्राइटेरिया यूज करने हैं. एक तो डिफिकल्टी लेवल क्या है और एक आप किस में हाई स्कोर कर सकते हो. So rank your section or give priority to that section where you can score more marks. Right. So first thing is how you should divide your time. I think there is a rule of 45, 45, 50, 45. Please make sure that you are at least giving 45 minutes to each of the section, right? So if you give 45 minutes to all the three section, roughly comes around 135 minutes and you will have a buffer time of roughly 35 minutes, which is more than enough if you want to ace some specific section. तो 45 45 45 आपको मिनट्स देने हैं, उससे ज्यादा पहले राउंड में आपको कोई भी सेक्शन में मिनट नहीं देने. फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर अटेम्प्टिंग VA पार्ट और VA में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, so what you have to do is you have to leave that VA after 45 minutes and then buffer में जब हमारे पास 35 minutes मिलेंगे then you can come back to the VA and then you can attempt more questions, right? Then VA is confusing but you cannot do much here, right? So please understand this, that VA में every candidate, even the person who has scored very well in the CAT,
उसको भी दिक्कत आ रही है वीए करने में, वीए में एक्यूरेसी लाने में, बिकॉज 5 ऑप्शंस हैं और यहाँ पे वीए थोड़ा क्रिटिकल रीजनिंग पे, इन्फेरेंस पे ज्यादा फोकस करता है। कैट में क्या था कि जो पैराग्राफ में मेंशन है आपको उसी बाउंड्री में रहना है, उसी के बेस पे आपको आंसर करना है। बट यहाँ पे थोड़ा सा इन्फेरेंस बेस्ड, थोड़ा सा क्रिटिकल रीजनिंग जब डालोगे और ऑप्शंस भी आते हैं, वो भी उतने इजी टू एलिमिनेट नहीं होते, राइट? सो एक्यूरेसी विल प्ले अ बिग रोल, बट आई वुड से कि यहाँ पे यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू एज ऑफ नाउ। और पिछले एक महीने में भी यार आप क्या कर सकते थे, राइट? रादर देन गोइंग बैक टू द पीवाईक्यूज और प्रैक्टिसिंग मोर सीआर क्वेश्चंस, अदरवाइज देयर इज नथिंग मच यू कैन डू फॉर द वीए। सो डोंट वरी अबाउट दिस सेक्शन, राइट? गो विद द फ्रेश माइंडसेट एंड अटेम्प्ट एंड गो विद द गट फीलिंग कि आपको अगर कोई ऑप्शन सही लग रहा है, गो विद दैट, राइट? आई हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस जहां पे बड़े बड़े टीचर्स, कोचिंग वाले ये बताते हैं कि यार ये ऑप्शन सही होने वाला है, बट एक्चुअल आंसर की में कुछ और ही दिया होता है, राइट? सो दिस विल ऑलवेज बी देयर इन द जेट एग्जाम, सो दैट्स व्हाई देयर इज नो पॉइंट इन ओवर थिंकिंग अबाउट वन क्वेश्चन और वन ऑप्शन। DM में you have to be very careful while reading the sets, while reading the sub questions, because all the situations that you are going to get वो बहुत ही relatable होगी, उससे आपके जो पर्सनल ओपिनियंस है वो बाहर आएंगे। बट आपको जब डीएम आप अटेम्प्ट करोगे तो आपके पर्सनल ओपिनियंस आपको बाहर नहीं आने देने, आपको जो एग्जाम एक्सपेक्ट कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क करना है। एंड द अनदर थिंग इज डू नॉट कनेक्ट द सब क्वेश्चंस, देयर विल बी अ मेन सिचुएशन फॉलोड बाय 3 और 4 क्वेश्चंस। तो जो 3 और 4 क्वेश्चंस होते हैं वो पढ़ के आपको लगेगा कि यार हाँ पिछले वाले में ये हुआ है, अब क्वेश्चन उसी पे स्टोरी बिल्ड कर रहा है, राइट? बट दिस इज नॉट द राइट थिंग। अगर आप वैसे ही करोगे तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है ना, लेट्स से इफ यू आर गोइंग विद सम माइंडसेट एंड अटेम्प्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, you will apply the same logic or same mindset to the second question, to the third question, to the fourth question. So for example, let's say if that mindset, if that logic turns out to be incorrect, you will have 4 incorrect questions, right? So treat every sub question independent of each other. It is really independent of each other. You can connect the dots with the main situation that is given, right? But उसके अलावा उसको कहीं और से relate मत करना, right? QADI, I believe that this is a scoring section for everyone out there, right? At least जो आपने क्वांट स्कैट में अटेम्प्ट करा है उससे ज्यादा आप डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हो, बिकॉज यू विल हैव मोर टाइम, राइट? द क्वेश्चंस आर नॉट दैट डिफिकल्ट, दे आर लेंथी एट टाइम्स, but it is a mix of easy, difficult, moderate questions, so you have to figure it out. You will have more choices, 28 questions, right? वहां से अगर आप 15 16 17 18 क्वेश्चन भी कर लोगे तो still you will land up at a very good percentile. So यहाँ पे, and again the 35 minute that we are talking about, the buffer time that you have, you can give that time to this quant section, right? So again, if you are weak at this section or if you are good at this section, I think buffer time will help you in a lot of ways, right? And do not jump too much across sections, right? This is one of the mistakes that I did in my first 2 attempts of the ZAT exam, because I had a freedom of switching between the sections. तो मुझे लगा कि बार बार थोड़ा सा डीएम कर लेता हूँ, थोड़ा सा बीए कर लेता हूँ, थोड़ा सा क्वांट्स कर लेता हूँ, ये बहुत कंफ्यूज करता है और आपको बाद में रियलाइज होगा कि यू एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम जो आप बचा सकते थे। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि कंटिन्यूटी में एक सेक्शन को अटेम्प्ट करो, क्योंकि वो आपका जो फ्लो बना होता है ना, जो आपका एक माइंडसेट बना होता है, वो कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करता है। सो वैसे ही आपको अटेम्प्ट करना है, कंटिन्यूटी में सब अटेम्प्ट करना है, राइट? हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2 दिन क्वेश्चन छोड़ दिए, दूसरे सेक्शन पे चले गए, दैट्स ओके, राइट? बट नॉट टू मच स्विचिंग इज एक्सेप्टेड बिटवीन द सेक्शंस, राइट? तो ये ध्यान रखना। Now let's talk about VA attempt. I will just give you an overview about the all the 3 sections. What are the important things that you need to keep in mind, and then we will finalize one single strategy that will work for all of you. So VA it is generally suggested that you should go with the flow, right? Because paper में mix of the questions आएंगे, कभी CR का आ गया, कभी fill in the blanks आ गया, कभी poem आ गई। My strategy used to be कि poem को मैं बाद में करूंगा, या कुछ difficult questions जो मुझे लगे I will keep those questions at the end, बिकॉज वहां पे मैं अपने फ्लो को ब्रेक नहीं करना चाहता या अपने दिमाग को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, राइट? सो यू शुड डेफिनेटली डू दिस थिंग कि अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पैराग्राफ अगर आपको लग रहा है कंफ्यूजिंग है, राइट, प्लीज पार्क दैट टू द एंड, सो दैट एट द एंड व्हेनेवर यू हैव टाइम यू कैन कम बैक टू दोज क्वेश्चंस एंड अटेम्प्ट दैट। इफ यू गेट स्टक, डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम इन ओवरथिंकिंग। आई नो अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, आपको लगता है कि यार बी ऑप्शन सिलेक्ट करूं या डी ऑप्शन सिलेक्ट करूं, राइट? बट बिलीव मी, अगर आप उस पर 5 मिनट और भी दे दोगे, you will not end up marking the right answer, or there is equal chance that you will end up marking the right or incorrect answer. तो बहुत ज्यादा सोचने से ऐसा नहीं है कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी,
राइट. यू कैन थिंक फॉर 30 सेकेंड्स, फॉर 50 सेकेंड्स की बी सिलेक्ट करूं या डी सिलेक्ट करूं इन सम ऑफ द केसेस, बट उसके बाद जो भी आपको सही लग रहा है, राइट, यू शुड गो विद दैट. आइदर यू कैन लीव दैट क्वेश्चन और यू शुड चूज समथिंग बिटवीन बी एंड डी, बिकॉज आंसर की में क्या आने वाला है नोबडी नोज. तो बेटर है कि वहां पे आपको जो चॉइस सही लग रही है उसको अटेम्प्ट करो एंड आगे बढ़ो. A lot of people miss on VA cutoff, so keep accuracy in mind. I am again re-emphasizing on this. A lot of people clear DM cutoff, a lot of people end up clearing QA cutoff as well. But VA में बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे मार खा जाते हैं. तो VA के सिर्फ अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज नहीं करना, थोड़ा सा अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करना है, थोड़ी सी एक्यूरेसी के साथ, थोड़ा सा फ्रेश माइंडसेट के साथ. एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स की पहले आप VA का सेक्शन करो, राइट. तो VA का सेक्शन जब आप पहले करते हो तो आपका फ्रेश माइंडसेट होता है एंड यू डोंट एंड अप कंफ्यूजिंग योरसेल्फ विद द numbers or with a lot of situations. You may solve all RCs in one go like CAT, right? So this is again a good strategy कि कुछ जो RCs वाले क्वेश्चन है, right, either you can attempt all those RCs at the beginning of the paper or maybe towards the end of the section, ताकि आपको कुछ बहुत ज्यादा डेविएशन ना फील हो, राइट. कैट में भी हम ऐसे ही करते थे, पहले RC अटेम्प्ट कर लो फिर सारा VA अटेम्प्ट कर लो. I think you can definitely follow that similar strategy here. Right, after 45 minutes leave the section and move to the next one, which should be your DM, right? Because again here the point is ki you can attempt this section for 60 minutes, for 65 minutes, but it is a trade-off, right? So if you are giving more time to the VA, you will have less time for the DM or for the quants, right? तो ऐसा ना हो कि quants का पेपर difficult आ जाए, you realize कि यार अब तो मुझे इसमें और ज्यादा टाइम चाहिए, but मैंने ज्यादा टाइम VA को दे दिया, right? So first give equal time to all the sections, then because 45 minutes 45 minutes 45 minutes सब जगह दे दोगे, आपको पता लग जाएगा कि पेपर का लेवल क्या है. तो रेस्ट 35 minutes you can devote to any of the sections based on your insights. Coming on to the DM part, this is a very critical section and one of the most important section for all the people who could not do well in the CAT exam, right? क्योंकि ये सेक्शन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, बिकॉज ये सेक्शन में सारे बंदे इक्वल है, राइट. नो वन इज टॉपर हेयर. टॉपर बस आपको आंसर की में जो आंसर सही हुए उसी के बेस पे डिसाइड होगा. बिफोर द स्टार्ट ऑफ द पेपर एवरीवन इज इक्वल हेयर. Based on your past experience, based on your coaching classes, you should definitely go try to attempt more than 18-19 questions in this section. Do not leave too much questions on this section. And as I said, you will not face a lot of challenge with respect to comprehension or understanding the passage or the given situation, right? Mistake one that a lot of students do, we already discussed connecting the sub questions. Mistake two is going too fast, right? Sometimes the situations you may be able to relate to the situations, but even in that case, please read the questions carefully. Only answer what is asked in the question and do not answer what you think should be the right answer, right? So पहले ये देखो कि क्वेश्चन में सिचुएशन तो पूछा है, बट वो किस पे फोकस कर रहा है, right? So sometimes it may happen that there are 3 or 4 stakeholders involved, but the question is specifically asking with respect to one stakeholder, right? So you have to read the question very carefully. So next is supremacy of your opinions. बहुत सारे बच्चे ना अपनी जो इंस्टिंक्ट्स होती है, अपने जो बायस होते हैं उसके साथ आंसर्स को मार्क करते हैं, which is not a good approach, because आप एग्जाम देने जा रहे हो, you have to think like from the institution side, from the professor side, कि उन्होंने अगर ये क्वेश्चन बनाया है तो किस हिसाब से बनाया होगा, and all this should come from your PYQ analysis, which you can definitely do in the next 1 or 2 days, right? Mistake 4 is spending too much time on one of the situations. Again, कुछ कंफ्यूजन आएगी, आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो कि इसका आंसर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए. इन दैट केस आई वुड सजेस्ट या तो क्वेश्चन को लीव कर दो, otherwise go with your gut feeling, right? Do not spend or do not waste too much time on single question. QADI one of the most important sections. बच्चों के दिमाग में जो सबसे बड़ा मिथ है वो ये है कि ये सेक्शन तो डिफिकल्ट ही आता है, ये सेक्शन इजी आता ही नहीं है. बट इफ यू गो बैक टू द लास्ट 3 years of PYQs, you will feel that this section is a mix of super easy questions, moderate questions, difficult questions. Believe me, there will be 5 to 6 super easy questions and you can literally pinpoint those questions कि यार ये question मैं एग्जाम में कर सकता हूँ, right? So definitely have a good start with those questions, with moderate questions. Selection would be the key in this section because 28 questions आ रहे हैं, राइट. तो उसमें 7-8 क्वेश्चन आई थिंक DA के होते हैं, DI के होते हैं, बट क्वांट्स के जो 20 क्वेश्चन है उसमें भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना, राइट. DI is also solvable to an extent if you compare to this year's CAT paper. I think
उसके with respect DI is just 50% of that difficulty level, and you all can solve that DI if you understand what they are trying to say. Most often people do not understand what they mean by their language, right? So that's a different issue. Otherwise they are very clear with their language, and if you understand the set, I think you can easily solve the set. Some questions may take time or turn out to be lengthy, but they are solvable, right? So ZAT में क्वांट्स में यही होता है कि क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं. पहले तो कैलकुलेटर भी नहीं था, नाउ यू विल गेट कैलकुलेटर एज वेल, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर विल बी देयर. बट स्टिल आई वुड से कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जा रहा है, डू नॉट गेट नर्वस. कैट में ऐसा होता है कि अगर 1.5 मिनट के ऊपर अगर आप ले रहे हो तो दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग द रॉन्ग अप्रोच. बट यहाँ पे कभी कभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा कुछ क्वेश्चंस में. सो गो विद दैट अप्रोच, राइट? डू नॉट डाउट योरसेल्फ, right? There will be some questions which will take some time, right? Keep buffer time average or toppers, right? So especially for this section I would say, if you have 20-30 minutes extra compared to other sections, and if you are an average student or topper student, अगर एवरेज हो तो आपको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्कोर इंक्रीज करने की. बिकॉज डीएम और वीए में आई बिलीव कि यार सर्टेनिटी नहीं होती, राइट? एक्यूरेसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, है ना? बट क्वांट्स में आप ट्रस्ट कर सकते हो. सो इफ यू हैव 20-30 minutes in your plate, you can definitely devote to this section. And let's say if you want to top this exam, still I think QADI will be a scoring section for you, right? Because बाकी सेक्शन आई बिलीव कि आप 50-55 मिनट में रैप अप कर दोगे, एंड और ये सेक्शन में अगर आप 70 मिनट के आसपास दोगे तो देन इट विल हेल्प यू अ लॉट. एंड डू नॉट जज क्वेश्चन बाय टॉपिक नेम. सो लॉट ऑफ यू में फील कि यार ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया है, वो तो मैंने कवर ही नहीं किया, नंबर सिस्टम तो मैंने किया ही नहीं है, ये क्वेश्चन तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा. बट एटलीस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, एंड इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल रियलाइज कि उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज की नीड ही नहीं है. if you are well versed with the basics, you can solve the question. That is famous for silly mistakes, right? Believe me, a lot of toppers including me, every time I go I expect a score of 25 plus in QADI, but end up scoring 20 or 21 marks. The reason is कि there are questions जो पेपर में आपको पता ही नहीं लगेगा कि silly mistake आपसे करवा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल एक देयर इज अ फेमस क्वेश्चन ऑफ एग्स वाला, राइट? एग्स उसने लाया वो रेफ्रिजरेटर में रख दिए. सो द की इन दैट क्वेश्चन वाज कि एग्स कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकते, राइट? सो पहली बार जो आंसर आएगा आपका जेड में वो ऑप्शन में होगा, बट वो करेक्ट आंसर नहीं होगा, राइट? तो इस टाइप की सिली मिस्टेक्स काफी होती है. अगेन गो बैक टू द पीवाईक्यू, एनालाइज फॉर द नेक्स्ट 2 days, एंड जस्ट रिलाई ऑन द पीवाईक्यू फॉर ऑल द 3 sections. If you analyze them carefully, if you have a strategy on how to maximize your attempts, I think this is going to be a very good attempt for all of you, right? Avoid panic and tukkas, right? So they panic should not be there when you have a lot of freedom. But let's say if you are panicked, if you are nervous, right, please avoid that. Please have a sip of water or go to washroom and then restart your paper, and avoid tukkas, right? So tukkas never help, especially in the ZAT, especially in the quant section. tukkas मारने का कोई फायदा नहीं है, unnecessarily negative marking आएगी. And if you are thinking कि यार 5 तुक्के लगा के एक क्वेश्चन भी सही हो गया and this and that, do not go with that calculation, at least for QA. Instead of doing that, I would suggest कि ज्यादा टाइम आप थोड़ा दे दो और क्वेश्चन को सोल्व करो. All right, so we have launched the GDPI booster course as well, right? The new batch is starting from today onwards. So if you are interested in GDPI, I'm pretty sure if you are going for the ZAT, you will receive a lot of calls from the CAT, ZAT, and MET, SNAP, right? So this is going to be your one-stop solution for all your GDPI needs. We have 60 plus mentors from different colleges, and we have dedicated mentor group. You will have complete freedom to book sessions with any of the mentors that is available, right? So we have 3 variants: basic, advanced, elite. The only difference across 3 variants is just the number of one-to-one sessions. Rest, every material, every live session will be same for all of you. So strategy 1, and this should be your strategy, you can make some changes if required, but मुझे लगता है कि you definitely should start with the easy sections first, because difficult section पहले start करने का I think कोई point नहीं है. unnecessarily confuse हो गए, और 3 hours के लिए बैठना with the confusion, with low confidence is not suggested at all. So please start with the section which is your favorite section, या जहां पे आप बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करोगे. DM और VA can be a good start in my opinion. Quants generally suggest मैं नहीं करता even if you are good at quants, because वो फिर पूरा ना थोड़ा सा दिमाग खराब हो ही जाता है नंबर्स वगैरह पढ़ने में. And QA might not be the, again keep eye on timer, right? Timer बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
सो टाइमर आपका कैसे चलता है, 170 मिनट्स टोटल लिखे होंगे एंड उससे एक 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 मिनट कम होता रहेगा. सो यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ, यू हैव टू डू सम कैलकुलेशन व्हाट इज 170 माइनस 45 और समथिंग, राइट. तो वो भी ट्रैक रखना पड़ेगा. And try to wrap up DM or VA in 100 minutes or max to max 110 minutes, so that at least you have 60 minutes for the quant section. And believe me, अगर आप 60 मिनट दोगे quant section में तो I cannot believe कि आप कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाओगे. You will easily clear the cutoff if you are good at the basics of arithmetic, basics of algebra, nothing else. अवॉइड सिंपल तुक्कास बट गो विद द गट फीलिंग. तो तुक्का तो क्यूएडीआई में तो लगाना ही नहीं है, बट डीएम एंड वीए में देयर विल बी सिचुएशंस जहां पे आप कंफ्यूज हो. सो whenever you are in confusion, just go with the tukka, just go with the gut feeling and avoid tukkas, right. So बिल्कुल ऐसा blank तुक्का नहीं लगाना, right. Go with your gut feeling, and if you feel कि यार नहीं इसमें मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, then it's always better to leave that question. क्योंकि कभी कभी आप सोच रहे हो कि बी होगा या डी होगा और आंसर टर्न्स आउट टू बी ए, right. So in that case, please leave that question and move ahead. Strategy 2, 3, 4 different strategies which you may opt out for, but generally I think this is going to be a good strategy for all of you. Start with DM and then choose any. You can go with this strategy as well, but DM maybe, I mean, why I don't go with the DM personally, because DM requires some type of workout before you start this section, right. तो वो VA में जब मैं जाता हूँ, VA को अटेम्प्ट करता हूँ, तो वो मुझे थोड़ा सा वर्कआउट जो मुझे करना होता है बिफोर डीएम वो अपने आप हो जाता है, राइट. सो आई बिकम मोर हैबिचुअल टू द पेपर पैटर्न, मेरी आंखें खुल जाती है, नींद उड़ जाती है. सो दैट्स व्हाई आई स्टार्ट विद द VA, देन डीएम एंड देन QADI, राइट. इक्वल टाइम टू ऑल सेक्शंस नॉट सजेस्टेड अकॉर्डिंग टू मी, कि अगर आप सोच रहे हो 170/3 मैं सारे सेक्शंस को दूंगा, because if you are going to give equal time to all the sections, then that means you are doing what you were doing in the CAT exam as well, right. So there is no point of having more freedom, there is no point of having complete flexibility to switch between the sections. तो जब आपके पास वो flexibility है, then better use it according to your strengths and weakness, right. So define where you are good at, and that's why पहले इक्वल टाइम 45-45 मिनट सभी को दे दोगे, उसके बाद बफर टाइम को अकॉर्डिंग टू द पेपर्स डिफिकल्टी लेवल आप यूज कर सकते हो. Prefer not to switch between two sections. This is what I suggest. मतलब not to switch too much between two sections. कभी कभी required है तो कर सकते हो. Generally एक ही flow में at least for the 40-45 minutes attempt one section and ignore cut off barrier in your mind, right. So a lot of students have कि मुझे quants में 8 marks लेके आने हैं, 10 marks लेके आने हैं, BA में इतना लेके आने हैं. Believe me, if I analyze last 7 to 8 years of that cutoff, it changes drastically whenever it changes, right. तो VA में कभी कभी 4 मार्क्स भी कट ऑफ था, कभी 10 भी था, राइट. तो देर इज नो फिक्स पैटर्न टू दैट. बेस्ट थिंग इज देर विल बी वन स्लॉट, राइट. सो एवरी स्टूडेंट विल बी फेसिंग द सेम काइंड ऑफ डिफिकल्टी, सेम पेपर लेवल. तो बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन द एप्लीकेंट्स परफॉर्मेंस, कट ऑफ डिसाइड होगी. तो अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट आ रहा है या पेपर बहुत ईजी आ रहा है, तो डू नॉट गो विद द स्पेसिफिक माइंडसेट, वहां पे अपना बेस्ट दे दो. आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ. One slot, one paper, this is advantageous for all of you. And if you need any other help, just DM me on this number, right. Oh, okay, so there is one error, I think. Let me confirm the number with all of you. This is 79, not 70. So this is 79 844-15114. So this is the correct number. Otherwise, just check the pin section, right. Just check the pin comment, right. I will attach the group link. I will attach XAT prep group link as well as GDPI prep group link. I hope this video makes sense for you, and I wish best of luck for XAT 2026. If you need any other help, just comment under this video. Looking forward to all of you for the GDPI booster.